Welcome class 11 chemistry student. Today I am going to deliver a speech about Bohr Atomic Model. We will discuss only five main postulates. Number one postulate says electron revolve around the nucleus in a fixed stable circular orbits called energy cells. Each circular orbit has a fixed amount of energy to hold electrons. Electrons in those orbits do not radiate any energy. Such orbits are said to be stationary states. Now we will discuss with the help of this structural diagram. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है. तो हम सबको पता है कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस विद इन द एटॉम, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर कम होता है. तो आपका क्या हो गया, नेट पॉजिटिव चार्ज of proton is maximum. That's why we have to take it as a nucleus as a positively charged center. And around this we have seen the circular, all these circular orbits. In these circular orbits, electron revolve around the nucleus. And third most important point is that each of these orbitals whose energies are being quantized. अच्छा, quantized का मतलब होता है fixed. Means अगर first orbital 1s2, the first orbits or energy cell has got the capacity of holding only 2 electrons. First orbits खाली 2 इलेक्ट्रॉन ले सकेंगे मैक्सिमम. सेकेंड वाला सिर्फ आपका 2, फिर थर्ड वाला 6 मैक्सिमम. ठीक है ना. तो इनका ये फिक्स होता है. दैट इज द एनर्जी ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स और द एनर्जी सेल्स are fixed. Clear? Now we'll come to the third postulate. The angular momentum of an electron is in a particular quantized energy cell is an integral multiple of nh by twice pi. What I have told you, quantized means energies are fixed. See here, we know that electron is following the circular motion here, right? So it has got an angular velocity. And if it has an angular velocity, we know the mass of the electron is also there, m. And whose angular momentum means mass into velocity into radius of atom. Okay? Now this form the angular momentum, which is an integral multiple of nh by twice phi, where m stand for mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of the orbit, n is the number of cell in an atom, h is a Planck's constant, and phi is nothing but 3.15. Now here all things are the variable, but h is a Planck constant, and Planck constant value is 6.626 into 10 to the power inverse 34 joules second, right? And this h and phi are constant, while others all are variables whose values are constantly changing. Now we'll come to the fourth point. The energy levels are denoted by positive integer values. Yes. See here. First label is denoted as a K cell. So here I have cell. N1 means K cell. Now here N2 means L cell. N3 means M cell. N4 is N cell, and henceforth it will go on multiplying the thing. Okay, see here, when an electron absorb photon energy, जब वो photon energy को जब absorb करते हैं तो वो क्या होता है, excite मतलब वो आपका promote होते हैं. This called the ground state. तो ground state excited state वो क्या होगा, आपका promotion हो गया. मतलब यहाँ पर absorption of photon energy को वो absorb कर रहा है, और absorb करके वो आपका चला जा रहा है एक्साइटेशन मीन्स हायर एनर्जी स्टेट में. पर आपको पता है हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचने के बाद में वहां पर उनका स्टेबिलिटी नहीं होता, स्टेबिलिटी बहुत कम होता है. इट इमीडिएटली वांट्स टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जहां पर था फिर वहीं वो आने मांग रहा है. तो ये को कहता है हम लोग एमिशन ऑफ रेडिएशन. किसको कहता है यह हम लोग, एमिशन ऑफ फोटोन एनर्जी और एमिशन ऑफ रेडिएशन. फर्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन करता है किससे, फोटोन एनर्जी को लेकर वो एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी
गेन करके वो आपका एक्साइटेशन हो रहा है, पर आपका एक्साइटेशन में क्या होता है, अनस्टेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन। तो अनस्टेबिलिटी होने के बाद में फिर यहां पर देखिए वो आपको वही ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है, इमिशन ऑफ द रेडिएशन। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रम का यहीं से वो शुरुआत हुआ। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, सी इट हियर। हियर वी हैव ड्रॉन n equal to 1 means k cell, l cell, m cell, n cell. This is just for your understanding, and these are nothing but the circular obvious diagram, but I have drawn in the horizontal manner. तो यहाँ पर देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप उसका फोटोन एनर्जी लेगा, इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, इट विल गो टू द हायर स्टेट, एंड हायर स्टेट is always considered as unstable, अनस्टेबिलिटी के तौर पर, एंड इट विल कम बैक टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। वो फट से आते हैं। और ये भी देखो, ये एक्साइटेशन हो रहा है, फट से वो आ रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, फट से। और यही स्पेक्ट्रल लाइन जब एक ही लाइन में अगर गिरता है विद द सेम एनर्जी, दैट गिव्स राइट टू डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड दैट गिव द concept of spectrum. Spectrum means it will fall on the same line with the same energy of electrons, like in a beam or the packet of electrons, giving rise to discrete spectral lines, which is forming a spectrum. Now, I hope you got the explanation well. And those who are new to my channel, please subscribe. And those who are old following me for the last few weeks or months, please continue to follow me, subscribe my channels, and press the black bell icon, and share to your friends, to your near and dear ones also. Till then, goodbye. Thank you.